DL number. So starting that, let statement, let last year 2025 paper, this question came. Let summation un is a series of positive terms. Students, please note that we are talking about the positive terms. The series of positive terms we are talking about. Let summation un is a series of positive terms such that limit n tends to infinity un by un plus 1 value is depending upon this small value of L. Then we say in our case number one, well, L is greater than 1, then the series is convergent. If L value is greater than 1, then it is convergent. Second special condition, if L value is less than 1, then divergent. And now case number 3. Case number 3 will not arise in limit comparison test. Okay, एक बार मैं फिर से आपको बोल दूं, everyone, please note that टेस्ट फेल होने का सिचुएशन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में नहीं होगा. याद रखिए आप, टेस्ट फेल कभी भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में नहीं होगा. टेस्ट फेल होने की जो सिचुएशन रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो टेस्ट या फिर अदर टेस्ट में रहेगी. राइट? So that is why we called that ratio test is a main backbone, because there is a possibility that the test fail also. Okay, test fail होने के chances भी रहते हैं ये टेस्ट में. अच्छा, आपको एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा, हमें कैसा पता चले कि कौन से एक सीरीज में कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है. तो मैं मॉर्निंग की क्लास में भी आपको बोल दिया था, अगर आपका यूएन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, आई रिपीट माय वर्ड्स, if your un is a proper fraction, then apply limit comparison test. If your un is a proper fraction, then apply limit comparison test. Otherwise, if your question will be involved with x means variable or factorial terms, means limit comparison test is not applicable. We have to go for ratio test only. क्वेश्चन में आपको x वाले टर्म्स या फैक्टोरियल टर्म्स अगर नजर आ गए तो इसका मतलब है कि आप उसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व नहीं कर सकते. यू हैव टू अप्लाई रेशियो टेस्ट ओनली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरी स्टूडेंट. Yes, sir. Okay, so now moving with the help of the problems, we have to take some sample questions. But this also will come in exam. Sample means ये ऐसा नया था बोल के नहीं बोल सकते. Number 1, we start our discussion with the problem number 1. Test the convergence of, and please reply everyone. Everyone should reply. Yes, Test sir. the convergence of all the students, those who are available in the class. Please reply everyone. Summation 1 into 2 into 3 and so on up to n divided by 3 into 5 into 7 and so on 2n plus 1. This is a summation value. Series will be given. We are going to check whether this type of series is only two things, because x is not involved. So this will not be arises. This case fail arises is not arises here. Only either convergent or divergent. So if the question is clear, then I can go for the solution. Is the question is clear for all the students? Yes, sir. Okay, very good. Now look at that. As I said so many times, summation value itself is a un value. Un is equals to 1 into 2 into 3 and dot 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 and so on up to n.
divided by 3 into 5 into 7 and so on up to 2n plus 1. अभी देखिए इसमें मैं इसको आपको वर्किंग रूल पे नहीं बताया, बट यहीं पे इसका वर्किंग रूल खत्म हो जाता. Step number 1 is un value, which we obtained already. Step number 2 is un plus 1 value. Okay. Then step number 3 is applying the limit. And then we'll approach into some answer. If that answer is greater than 1, then problem will be completed here itself. Okay. I hope it is clear. Yes, sir. Reply. Everybody. Yes, sir, it is clear. Now un Yes, plus sir. 1, I want to move it. Un plus 1. Because it is a series, so how to get the un plus 1 value? Look at that. 1 into 2 into 3 and so on. N, we have to keep it as it is. And n plus 1 means we have to write the immediate next term. अगर आपके पास सीरीज फॉर्म में आपका un है तो n टर्म कैसा लिखना, और आपके पास डायरेक्ट nth टर्म है तो un plus 1 कैसे लिखना, दोनों केसेस पे भी क्वेश्चन करूंगा मैं भी आज की क्लास में. 3 into 5 into Yes, 7 sir. and so on 2n plus 1 as it is. Now I want to get 2n plus next un plus 1 value means रफ कॉलम में क्या करना है, जहां पर भी n है उसको n plus 1 से रिप्लेस करना, n plus 1 plus 1. So our answer is it's a 2n 2 ones are 2 plus 1 2n plus 3. 2n plus 3 is our un plus 1 value. Is un plus 1 is clear for all students? Sir, didn't get the second one, the denominator one. यहाँ पर n को रिप्लेस करके अपन कैसे लिखे, n को रिप्लेस करके n plus 1 से लिखे ना, जहां पर भी n है n plus 1 को रिप्लेस करें. ये क्वेश्चन में n कहां पर है, इधर है, तो 2 into n plus 1 plus 1 करके जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको यहां पर लिखना है. तो क्या आंसर आ रहा है, 2n प्लस, ऐसा आंसर आ रहा है 2n प्लस 2 1 2 प्लस 1, मतलब कितना आंसर आ रहा है, 2n प्लस 3 आ रहा है. तो 2n प्लस 3 को यहाँ पे लिखना है. करेक्ट. Okay. Okay, right. You have a right that you can ask the question, no problem. 2n plus 3. Now next, un by un plus Sir? 1 value. Yes. I have a question. जैसे यहाँ in numerator we have just one term n, right? So is there any kind of a question where n could be like the denominator 2n plus 1 kind of a question No, in yes, numerator? yes. It is also maybe arises. That type of question will Okay. also there. So That okay, when we sure. have a question, we can So discuss. we'll do one that. Okay, sure, sir. वो क्वेश्चन भी करेंगे. 3 into 5 into 7 and so on 2n plus 1 un value, and the second fraction will become reverse. 3 into 5 into 7 and so on 2n plus 1 into 2n plus 3 divided by 1 into 2 into 3 and so on n into n plus 1. Look at that, how many terms are cancelled. If you notice, some of the terms up to n plus 1 it is cancelled, up to 2n plus 1 it is cancelled. Then what is left of? Un by 1 plus 3 by un plus 1 1 is equals to what's left of? 2n 2n plus 3 by plus 3 by n plus 1 is left over here. Okay. Now if you notice, this type of fraction is called improper fraction because n का पावर न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, मतलब अपन vn को चूज नहीं कर सकते, मतलब अपन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते. n कॉमन 2 plus 3 by n. Similar story here, taking n common 1 plus 1 by n. What happened here is n cancel. Now apply the limit. Limit n tending to infinity un by un plus 1 is equals to limit n tending to infinity 2 plus 3 by n divided by
1 plus 1 by n. Can you tell me what is the answer of this? Anybody? Because 3 by n is 0, 1 by n is 0 as applying the limit. What is the answer? 2. 2. That is greater than 1 now. Yes, sir. Conversion. This arises now. 2 is greater than 1. Yes, now. So Yes, therefore, sir. what do you write in our answer? Therefore, in our answer, we write by ratio test. Because we applied ratio test, so we have to write by ratio test summation un conversion. Finished. This problem is completed. That's it. यहाँ पर x इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ जा रहा। अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा, तो फिर अपन क्या करना पड़ेगा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट। Now question number 2 from this in our discussion. Test. अब्दुल अजीम is clear for you. Please, मैं सबके नाम लेके नहीं बोल सकूंगा यहाँ पर, I'm sorry. आपको डाउट है तो आप Yes, प्लीज sir. Clear. अप्लाई करिए आप मेरे को। जी सर। It's the convergence of summation x power n by n. That's it. This much only the question. X power n by n. Solution. अब आप पिछला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। आप पिछला वाला जो क्वेश्चन था अपना, उसमें जो है ना सीरीज दिया हुआ था, तो मैं nth टर्म कैसा बनाया, एवरीबडी नोटिस प्लीज। सीरीज में कैसा बनाया, 1 into 2 into 3 n लिख के फिर उसके बाद वाला टर्म लिखा। बट अगर अपने पास nth टर्म है अपने क्वेश्चन में, तो फिर कैसा बनाएंगे। समेशन वैल्यू इटसेल्फ इज ए un वैल्यू। दिस डिस्कशन विल कम अगेन अगेन एंड अगेन। x पावर n by n। अब मैं इमीडिएटली यहीं पे विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई वांट टू राइट आवर un plus 1 वैल्यू इज x एज इट इज। जहां पर भी n है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ n plus 1 से, यहाँ पर भी n को रिप्लेस कर देता हूँ n plus 1। खत्म। क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पर अपने पास सीरीज था, और सीरीज कौन सा पैटर्न में थी, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, तो उसके बाद वाला टर्म भी अपन वही फॉर्म में लिखे, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर दिया। n है उसके बाद n plus 1 आता, अगर मान लो यहाँ 7 है तो 7 plus 1 8 आता बोल के बता दिया अपन। और यहाँ पर 2n plus 1 है, उसके बाद वाला टर्म 2n plus 3 आता बोल के बताया। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने पास nth टर्म है तो un plus 1 बहुत आसान आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, un by un plus 1 value, that is equal to first term un value as it is, x power n by n as it is, multiply by second fraction रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा n plus 1 by x power n plus 1 which is equals to x power n divided by n must be as it is multiplied by, can we take n common here, we are left with 1 plus 1 by n. And in the basic classes you have learned one formula, when the bases are equal power should be added. So when power already added we can split it. Am I clear here? Yes, sir. Yes. So some of the terms are again cancelled. What are the terms? X power n, यहाँ से n cancel. Now apply the limit on both sides. Taking limit n tends to infinity on both sides. Limit n tends to infinity, un by un plus 1 is equals to, see, when applying the limit, make sure that the terms which are free from n should be outside, like x 1 by x को अपन निकाल देंगे बाहर। Limit n tends to infinity, 1 plus 1 by n, and this 1 by n after applying the limit it becomes 0, so we are getting our answer is 1 by x. What do you say about the nature of this series? क्या बोलेंगे इसके बारे में आपके कुछ? Can you comment about
Which type of series is this? Convergent or divergent? Can't be defined, sir. Its value is not. Can't say because it is totally depend upon x now. The x will decide the nature Yes, sir. of this. So we have to write that one. That one because we are approaching some answer. It is not sure. Variable पे आ गए पर ऐसा लिखना है यहाँ पर by ratio test. अच्छा ये रेशियो टेस्ट ऐसा इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है. रेशियो टेस्ट में जो काम करे वही काम अपने को रेबी टेस्ट में भी करना है, वही काम अपने को रूट टेस्ट में भी करना है, वही काम अपने को लॉगरिथमिक टेस्ट में भी करना है, वही काम अपने को लेबनिज टेस्ट में भी करना है. तो एक बार सीख लिए तो हर बार काम आता तुझे. इफ 1 by x is greater than 1, see 1 by x greater than 1 को mathematically can also be written as x is less than 1 now by taking reciprocal. If you take the reciprocal, the inequality will change because we have to talk about x. X denominator में नहीं चाहिए, x numerator में चाहिए. Then convergent. Another statement. If 1 by x Sir, is can you explain, sir, why are we taking 1 by x greater than 1? what is the statement of ratio test? अभी पढ़े ना अपन. Ratio test Sir, का statement statement क्या I है? understand. रेशियो टेस्ट का क्या पढ़े? ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट. ये अपना एल वैल्यू अभी कितना आया? 1 by x आया ना. तो 1 by x ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होता. Understood. Sir, लेकिन अगर if x would have been 2, then it would be less than 1, right? How you know x is 2? How you know x is 2? How you It's know just an if. you can't say anything about x. That's what we have to fulfill Okay. the statement. All the 3 points we have. Okay. 1 by x is less So we than. just need to copy the statement again, right? That's it. Because how will Okay. we say that it is 2, it is 3, it is 5? कैसा बोल सकते हैं अपन? नहीं बोल सकते ना. So जी all जी. 3 points equally we have to write according to the statement. If 1 by x is equal to 1, taking reciprocal x is equal to 1, it's a very special case. Then we'd say that test fails. And we simply don't stop your problem by writing test fail. अच्छा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट अगर फेल हुआ तो क्या करते बोलिए? We have to write the supplementary exam, right? तो यहाँ पर एक Yes. टेस्ट फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखना पड़ेगा. तो सप्लीमेंट्री एग्जाम इज if x is equal to 1, then where we have to put? Here we have to put in equation number 1, जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा. तो अब un क्या बन जाएगा? अगर x की वैल्यू 1 है, 1 power n is 1 by n only. Okay, simply Yes, we sir. have to compare this one with n Sir, power. didn't get. What is x? Tell me. X is 1 now. If x is 1, you have to put in equation number 1. 1 to the power of n Oh. divided by n means nothing but what? 1 only. 1 power n रहो, 2 रहो, 3 रहो, Okay. 5. 1 का पावर अगर 5 है तो 1 ही आंसर आता. 1 का पावर 2 है तो 1 ही आंसर आता. 1 का पावर n है तो भी 1 ही आंसर आएगा. We get Yes, sir. जी. the un value is 1 by n. This one we have to compare with. Have you remember our p test? 1 by n Yes, power sir. p is our p test na? Yes. If you compare, our p value is 1. So by p test, un convergent. By p test, un convergent. Now we have to write the statement again. ये इसको फिर से अपन कॉन्ट्राडिक्ट करके लिखना. कैसे लिखेंगे? Hence, given series convergent. Hence, given series convergent if x is, already we said that it is less than 1, and we have proved that x is equal to 1 may be convergent हुआ. So together we write less than or equal to 1, and then divergent
इफ x is greater than 1. अगर मान लो यहाँ पर x is equal to 1 रखने के बाद अगर आंसर डाइवर्जेंट आता तो मैं x लेस देन 1 तो एज इट इज रखता था, डाइवर्जेंट को मैं इक्वल टू साइन से ऐड कर देता, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. लाइक दैट वी हैव टू फिनिश अवर प्रॉब्लम. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ओके So, but यस बोलिए. sir, I didn't p-test came in between. पी टेस्ट सुबह में ही करना है. पी टेस्ट तो सुबह में ही बताया ना मैं आपको. समेशन n इज इक्वल टू जी सर, I know सुबह किए, but I'm not getting ये रेशियो टेस्ट में p-test क्यों आ गया? हाँ ऐसे चाहता. अब आपको आप रेबी टेस्ट अपन करेंगे ना, रेबी टेस्ट में भी फिर रेशियो टेस्ट आता, रेशियो टेस्ट में फिर पी टेस्ट आता. ये पूरा कनेक्शन है. Okay. कनेक्शन है. हेल्पिंग टेस्ट है ना, कहीं भी आके हेल्प कर सकता हूँ. Sir, what all tests are helping tests, sir? ओनली पी टेस्ट इज हेल्पिंग टेस्ट. Okay, sir. ओके लेट अस मूव सर ऑन. अगर अपन नॉर्मली x इज इक्वल टू 1 लिए ना, अगर उसमें भी टेस्ट फेल हो गया तो सेकंड टाइम नहीं करना होता बाबा, यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं हो नंबर. सकता. सप्लीमेंट्री में इधर एग्जाम हमारा एक ये सीक्वेंस सीरीज का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ कहीं तो भी आप गलती कर लिए. एक ही अटेम्प्ट रहता तो है पी बस. टेस्ट में कंपलसरी हो कन्वर्जेंट जाता हो. डाइवर्जेंट आता. कोई भी यहाँ पी टेस्ट बोल के कंपलसरी नहीं है. यहाँ पर अपने कोई भी टेस्ट लगाओ. यहाँ पर मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकता था इसको. अब आगे आगे चल के वैसा भी एक प्रॉब्लम आ रहा. एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैं यहाँ पर इजी था बोल के मैं पी टेस्ट लगा दिया. अब आगे चल के अगर ये इजी नहीं हो रहा, मेरे को पी टेस्ट से आंसर नहीं आ सक रहा, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पर लिमिट जी. कंपैरिजन टेस्ट कराऊंगा. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा. Okay, sir. नहीं तो अपन डायरेक्ट दूसरा नंबर नहीं ले सकते 1 की जगह, अगर उसमें नहीं आ रहा तो. नहीं 1 का ही हुआ, आपको एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिसाइड करना पड़ेगा ना. अब सपोज आपके आप मैथ्स में फेल हो गए तो मैथ्स का ही री एग्जाम लिखेंगे ना आप. सप्लीमेंट्री मैथ्स का लिखेंगे या नहीं, जाके फिजिक्स का लिखेंगे मैथ्स फेल हो गए बोल के. एक्स इज इक्वल टू जी 1 पे टेस्ट फेल हुआ तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही टेस्ट को पास कराएंगे ना. जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पेपर में मेरे को कई बार ये क्वेश्चन दिखा है. द क्वेश्चन इज एक्स बाय टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ कोर्स कॉमनली यहाँ पर नहीं लिखा मैं. 1 into 2 plus x square by 2 into 3 plus x raised to the power of 3 by 3 into 4 plus and so on up to infinity. So now we have to check whether it is convergent or divergent. So let's start our work. Our basic primary step number 1 is the un value. un value मतलब इसका nth टर्म कैसा बनाएंगे. देखो यहाँ x पावर 3 दिख रहा है, यहाँ x पावर 3 मतलब ये x पावर 1 भी होगा यहाँ पर. तो न्यूमरेटर में सब जगह x है तो x पावर n होगा. यहाँ और एक लॉजिक देखिए आप. 1 से स्टार्ट हो रहा तो n इज द nth टर्म. 2 से स्टार्ट हो रहा n plus 1 इज द nth टर्म. 3 से स्टार्ट हो रहा n plus 2 इज द nth टर्म. 4 से स्टार्ट हो रहा n plus 3 इज द nth टर्म. कोई केसेस ऐसे भी हो सकते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा n minus 1 इज द nth टर्म. तो अपना जो स्टार्ट हो रहा 1 2 3 मतलब n से 1 से स्टार्ट हो रहा तो n डिवाइडेड बाई. अब ये पैटर्न कैसा बन रहा देखो. 1 into 2 2 into 3 3 into 4 1 मतलब n राइट. 2 मीन्स n plus 1 बन गया आपका un. n plus 1. बन गया परफेक्टली. चेक करना है कर लो आप. x n की वैल्यू 1 दे दो फर्स्ट टर्म आएगा. n की वैल्यू 2 दे दो सेकंड टर्म आएगा. n की वैल्यू 3 दे दो थर्ड टर्म आएगा. Immediately we have to move on. Please, some disturbance is going on. X power n plus 1 by n plus 1 into n plus 2. Please don't come here.
un by un plus 1 value, that is equals to x power n by n into n plus 1. Second fraction will become reverse, that is n plus 1 into n plus 2 divided by, if you allow me, I want to write here this one like that, x power n into x power 1, right? Because I want to reduce one Yes, step. sir. This n plus 1 Yes, sir. cancelling with this, x power n cancelling with this. Next, पहले आप कोशिश करो सब लोग, हाँ यस, कोशिश करो कि आप लोग यहीं पे अंडरस्टैंड हो जाने की, फिर भी आपकी रेंज से बाहर हो रहा तब क्वेश्चन पूछिए आप. 1 by n into, taking n common here, we are getting 1 plus 2 by n divided by x. N and n cancel. Taking limit n tends to infinity, un by un plus 1 value is equals to 1 by x outside. Limit will go to like that. Limit n tends to infinity, 1 plus 2 by n. And we know that 2 by n will become 0 if n tends to infinity. Our answer is 1 by x only, like a previous problem. अच्छा ये मत समझो हमेशा 1 by x आता है, शायद कोई 2 by x भी आ सकता, उधर कुछ भी आ सकता, Okay. बट Okay. x इन्वॉल्व हो गया तो वी कैन नॉट से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, कुछ नहीं बोल सकते आप. सो देन वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट लाइक दैट. ऐसा लिखना पड़ेगा. इफ कौन से टेस्ट से कर रहे हो वो भी लिखना पड़ेगा, बाय रेशियो टेस्ट. प्लीज स्टूडेंट आज ही रेशियो टेस्ट के ऊपर वर्कआउट शुरू कर दो आप, और ये समझो कि कल ही एग्जाम है. 1 by x is greater than 1. क्वेश्चंस, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस. यूट्यूब पे मेरे कई कम से कम मैं समझता हूँ 50 रिकॉर्डिंग्स आपके सिर्फ रेशियो टेस्ट पे होंगे शायद. x is less than 1, then convergent. Next statement, if 1 by x is less than 1, which implies that मैं डेली 2 सेशंस आपको लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो एक सेक्शन में कंप्लीट नहीं होगा, तो वी मैक्सिमम ट्राई टू टेक 2 सेशंस डेली. मैं टाइम भी आपको 1 आवर बिफोर ही बोलूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अपन जितना चाहे जल्दी करेंगे. x is equal to 1, टेस्ट फेल्स. अब क्या करना पड़ेगा, अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया आप लोगों को, क्या करूंगा यहाँ पर, बोलो बोलिए. Substitute x equals to Yes, un. x is equal to 1. Where we have to put, फिर से यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 में. अब सबका डाउट क्लियर होता है. un is equals to, we are getting our un value is 1 power n is 1 by n into n plus 1. अब मेरा ये क्वेश्चन अराइज हो रहा, क्या मैं इसको पी टेस्ट से कर सकता हूँ, मतलब नहीं कर सकता, पी टेस्ट के फॉर्मेट में नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई विल गो बैक टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बिकॉज इट इज ए proper fraction. We have to choose our vn value, that is highest power of n from numerator. डिनोमिनेटर को अगर अपन देखें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो ऐसा दिख रहा हो n स्क्वायर प्लस n. तो हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर इज n स्क्वायर. नाउ थर्ड स्टेप सबको पता है क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब ऐसा मत समझो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कर लिए थे हो गया था फिर कहीं को आ रहा, ऐसा नहीं. अपन लास्ट टेस्ट करते वक्त फिर से नहीं आता, एक बार है बोल तो पूरा डिस्कशन खत्म होने तक है. 1 by, this is our un value, I want to take n square common, 1 plus 1 by n here left off, multiplied by second fraction is n square by 1. Again these two are cancelled. Apply the limit, we are getting our answer is 1, which is not 0 and finite. मैं आप लोगों को जब भी बोला था रेशियो टेस्ट अपना बहुत बेसिक टेस्ट है, वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन un
and summation Bn behave same. Behave same. Yes, get lost. चलो यहाँ से जाओ. But summation Bn is equals to, what is summation Bn value? 1/n. देखो आप लोगों सब लोग देखो, रेशियो टेस्ट में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आ रहा, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में पी टेस्ट आ रहा. अब आगे चल के अपन रेबी टेस्ट पढ़ेंगे ना, तो रेबी टेस्ट में रेशियो टेस्ट आएगा, रेशियो टेस्ट में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आएगा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में पी टेस्ट आएगा. एक चेन आपकी बढ़ते रहेंगी. P is equals to 2 is greater than 1. Yes, So sir. by P test, summation Bn convergent. This implies summation Un also convergent. But we don't stop here because this is only supply. Yes. यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन आपको सेपरेटली एग्जाम में भी पूछ सकता, खाली इतना देके टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ. और फाइनली वी हैव टू राइट द कंक्लूजन. हेंस, कम ऑन एवरीबॉडी, हेंस given series, hence given series, come on, I want your answer. Convergent, come on, when, कब होगा? If x is greater than में भी हो गया कन्वर्जेंट, देख सकते हैं आप शीट में, लेस देन में भी हो रहा और इक्वल टू में भी हो रहा. जी सर. लेस देन में भी हो रहा और इक्वल टू में भी हो रहा, इक्वल टू 1. एंड divergent if x is greater than 1, and this is the end of this problem. Successfully we have completed a foundation course, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन अपन करें जिसमें फाउंडेशन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी. ओके, वी हैव अ टाइम, प्लीज. आई वांट टू मूव ऑन फॉर वन मोर क्वेश्चन. 5 मिनट बाकी रह गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करके एक और क्वेश्चन भी कर देता हूँ. Okay, sir. So the question is, प्लीज अगर कोई स्टूडेंट को ये क्वेश्चन हो गए हैं फिर भी आप सुन लो, आपको काम आएगा. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ summation n is equals to 1 to infinity, okay, 3 minus 4i, 3 minus 4i, 3 minus 4i raised to the power of n by n factorial. अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था n factorial वाले टर्म्स, कोई भी टर्म ऐसा, कोई क्वेश्चन जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा, वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व नहीं होता. So now start the solution. Summation value itself is a un value. Okay, 3 minus 4i raised to the power of n by n factorial. N factorial. Immediately we have to move on for finding their un plus 1 term, because ये question ही itself is a un plus 1. 3 minus 4i, n is replaced with n plus 1 by n factorial replaced with n plus 1 factorial. Now next step is un by un plus 1. This is equal to 3 minus 4i raised to the power of n by n factorial multiplied by, second fraction will become reverse, n plus 1 factorial by, if you allow me, I want to split the terms here. 3 minus 4i, इसको भी अलग से n लगा देता हूँ, और 3 minus 4i raised to the power of 1, actually no need to write. This one and this one cancel. un by un plus 1 value is equal to 1 by n factorial. और एक बेसिक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. What is that formula is, n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. That logic I want to apply here. So that if you apply, ये n factorial assume कर लो आप इसको, n into n minus 1 factorial
डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, n फैक्टोरियल बच गया, इस n फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा। So un by un plus 1 value is un by un plus 1 value is equal to n plus 1। अब देखो न्यूमरेटर में ऐसा कोई टर्म बच रहा ही नहीं जहां से आप n को कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब n यहाँ से कॉमन में निकाला भी तो कहीं से भी वो डिनोमिनेटर का n कॉमन रह रहा ही नहीं, डिनोमिनेटर में n कोई टर्म बच रहा ही नहीं, तो वो कैंसिल हो रहा ही नहीं। सो अपना जो आंसर बच रहा वो क्या हो रहा, limit n tends to infinity, we get our answer is n plus 1 by 3 minus 4i। As n tends to infinity, we are getting the answer is infinity only। infinity एक ऐसा सिंबल है, उसके साथ कुछ भी काम करो, infinity plus 1 is infinity, divided by infinity is infinity, infinity का रूट infinity, infinity का पावर infinity, infinity की जो काम करते हैं infinity के ऊपर आंसर infinity चाहिए, बट आपको पता है ऑलरेडी infinity ग्रेटर देन 1 होता है। Therefore, by ratio test, समेशन un कन्वर्जन, जो भी आपका क्वेश्चन है वो कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि अपन दो केसेस में बात कर रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन हुआ तो कन्वर्जेंट बोल रहे हैं, लेस देन हुआ तो डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं बोल रहे अपन इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट होता, ऐसा कहीं लिखा क्या, मैं देखो ऐसा लिखा ही नहीं। मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 1 को कन्वर्जेंट बोला, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही un by un plus 1 की, ग्रेटर देन 1 को कन्वर्जेंट बोला, लेस देन 1 को डाइवर्जेंट बोला। मैं ऐसा कभी नहीं बोला खाली इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट होता बोला। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, So sir. these are the 4 questions, I hope it's clear for all the student। अगर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है जी तो सर। ये पीडीएफ को डाउनलोड करके, वैसे भी मैं आपको पीडीएफ भेजा रहा हूँ, हाईलाइट करके भेजाइए, वो स्टेप एक्सप्लेन कर, ठीक है। अपन जी सर। रोजाना 2 सेशन करेंगे, जी जी सर। कंप्लीट करेंगे, राइट। कल थैंक यू एवरीवन। कल की क्लास कब रहती सर? मैं बोलता हूँ सर मैसेज करके।